Hello students of 9th class. Today we'll discuss about 9th class chemistry second lesson is matter around pure. First of let example, we want to discuss about solute and solvent. We had 200 ml water and 50 gram sugar and we mix up and get a sweet water. That 250 ml. Now out of 250 ml, 200 ml is the greater part and 50 ml is the smaller part. Greater part means that is called solvent, the smaller part that is called solute. Okay, now we discuss about saturated solutions. Let us consider we have a 200 ml water, we continuously add water by spoon, then in the last we observe that no more sugar dissolve in water. At this stage that is called saturated. Means क्या है कि हमारे पास एक चीनी है हमारे पास, और अगर हम उसको वाटर में लगातार से स्पून वाइज मिलाते जाए तो क्या होगा, वाटर में एक ऐसी स्टेज लास्ट में जहाँ पर चीनी घुलना उसके बंद हो जाएगी. दैट्स पॉइंट नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशंस. ओके, मीन्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूटेड डिसॉल्व, जहाँ पर सोल्यूट घुलना बंद हो जाए, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस. नाउ थिंक इफ़ यू वांट दैट, मान लो कि उसमें 8 स्पून से ज़्यादा उसमें चीनी नहीं घुल रही. ओके, एंड वी वांट टू मिक्स 1 स्पून मोर in that water. Now what will we do? Now then we have to heat the solutions. Heat करें उसको. Now we can say the saturated solution becomes unsaturated. Means उसमें और चीनी घुल जाएगी, that is called unsaturated. Okay. Now what happens to saturated solutions if it is cooled? अगर हम उस saturated solution को cool करेंगे, freeze करेंगे, then what will happen? A certain amount of solute starts separating from the solution. It may either settle at the bottom of container or crust may be formed at its surface of the solutions. Means कि वो that is called saturated solution, super saturated solution. Now properties of solution. Solution is homogeneous nature, means completely mixed है वो, and same composition throughout. All the components or constituents in solution are present in the same phase. मीन्स उसमें सभी फेस सेम है. फॉर एग्जांपल जैसे आपका ग्लास स्वीट वाटर है इसमें, तो इसका जो टेस्ट यहाँ पर होगा वही यहाँ पे होगा और वही यहाँ पे होगा. मीन्स सेम कंपोजिशन थ्रू आउट. साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल, डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर और 10⁻⁹ मीटर. नाउ वी डिस्कस heterogeneous mixture. First of all, let's discuss suspension and colloidal solid that are also heterogeneous, do not completely dissolve. Suspension is one type of heterogeneous in which solute cannot dissolve properly and make different phase, like sand and water. Sand make different phase in water. Generally we have 3 types of solutions. First of all, solution, true solution, that is completely mixed, less than 1 nanometer size particles. Suspension greater than 100 nanometer and colloidal between 1 nanometer to 100 nanometer. मीन्स सबसे बड़े पार्टिकल इसमें होंगे, उससे छोटे इसमें होंगे, एंड देन लास्ट इन द सॉल्यूशन. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन. नाउ कंसीडर heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture has 2 phases like sand and water. Particle size more than 100 nanometer. Particle can be seen with naked eyes. दिखते हैं सिंपल आंखों से. सोल्यूट कैन बी इजीली सेपरेट कर सकते हैं उसको अपने फिल्टर पेपर से. ओके. नाउ कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैविंग पार्टिकल साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर. मीन्स की जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है दैट इज इन बिटवीन द सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. मीन्स सस्पेंशन से इसका साइज छोटा है पार्टिकल्स का, बट सॉल्यूशन से और ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा है. फॉर एग्जांपल इंक, ब्लड, सोप सॉल्यूशन, दैट आर एग्जांपल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन. नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस. कोलॉइडल सॉल्यूशन अपीयर्स टू होमोजेनियस बट आर एक्चुअली हिट, मतलब कि हमें देखने में होमोजेनियस लगते हैं बट एक्चुअली इट इज़ इन heterogeneous conditions like milk. Colloidal solution having 2 phase. Okay, colloidal particles pass through ordinary filter paper. ordinary filter paper से पास हो जाते हैं वो.
Particles in colloidal solutions move in zigzag path, like this zigzag path. Colloidal solution scatters beam of light when passing through it, like that is a colloidal solution. Here is torch. That light pass through it. Now, separation of constituent for mixture from mixture. First of all, heat mixtures like sedimentation and decantation. That process you already did in lower classes. Use of centrifugal machines in which mixture is stirred rapidly with dense particles. Okay, मतलब rapidly हम उसको stir करते हैं. Then what will happen? Dense particles settle down. Now here another example is magnet separations, sublimations, that is already discussed in the first lesson, by using separating funnel. That is separating funnel in which oil and water are mixed. Oil takes upper part and water becomes lower. When we open the stopcock, then water becomes down. When we whole water goes out, then we stop it and oil remains separate. Now next, separating of constituent from a homogeneous mixture evaporations. Salt like sodium chloride can be separated by simple evaporations. Separation of different gases from air. Air is a homogeneous mixture of gases. Nitrogen, oxygen, here see properly. Nitrogen, oxygens are the main constituents. Others, CO2, water have also particles of gases. Like inert gases, their constituent particles are separated by increasing pressure and decreasing temperature, that we already discussed. Now chromatography. This technique is used to separate colored components from pigments and dyes. Means कोई solution colored है, उसमें से जो pigments है, which this method used to separate. Now physical change in which no new substance are formed, property remains same. Example tearing of paper. पेपर को हमने फाड़ दिया तो रहेगा तो पेपर वो नई प्रॉपर्टीज नहीं आएगी उसमें. बट इफ यू बर्न पेपर, प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हो जाएगी. दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज. द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, प्रॉपर्टी चेंजेज. बर्निंग ऑफ पेपर, कुकिंग ऑफ फूड. दैट इज द एंड ऑफ सेकेंड लेसन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर. ओके, नेक्स्ट लेक्चर